अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्याय। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदाशक्ति रक्तदंतिका बीजमम् अग्निस्तोत्रम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्री महाकाली प्रेतर्थे सप्तशती प्रथमचरित्र जपे विनियोगः ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदे शुचापपरिघां शूलां भुषुण्डी शिरः शंखं संदधति करैत्रिनयनां सर्वाङ्गभूषां व्रतां नीलास्य द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तैत् सपितो हरौ कमलजो हन्तो मधुकैटभम्। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं मार्कण्ड्यो उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कठ्यतेष्टम निशामाया तदुत्पत्तिं विस्तरा गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्तराधिप सबूव महाभाग सावर्णीस्तनयोरवे स्वारोचिष्यन्तने पूर्व चैत्रवंशसमुद्भव सुरथो नाम राजाभूत् क्षमस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत् सौम्यक् प्रजापुत्रनिवरुषान् बभूवु शत्रुभो भूपा कोला विध्वंसिनस्तथा तस्य तैरभवत् युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनी न्यूनैरपि सतीर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः सोऽपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तस्य महाभागस्तैस्तथा प्रबलारिभिः अमात्ये बर्लिभिः दुष्टैः दुर्बलास्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि सोऽपुरो ततः ततो मृगया व्याजेन ऋतसौम्येश भूपति एकाकी हेमारुह्यं जगान गहनं वनं स तत्राश्रमदाच्छिद्विजवर्षे समेधसा प्रशान्तस्वापदकीर्णं मुनिशशो पशोभितं तस्थौ किंचित् स कालं च मुनिना तेन संस्कृत इतश्चेतस् विचारं च तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाग्रष्टचेतना मत्पूर्वं पालितं पूर्वमायाहीनं पुरहित तत् मद्भृतैर्तैरसद्भृतैः धर्मते पालते नव न जाने सप्रदानो मे शूरस्ति सदा मद मम वैरिवंशं यातकानुभोगानुपलप्स्यते यममानुगतं नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं दुर्वन्त्यन्ये कुर्वन्त्यन्ये महिव्रताम् असमज्ञशीलस्थैः कुर्विद्भिः सततं व्यायामं संचित्तशोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति यतश्चान्ये च सततं चिन्तं मायास पार्थिव तत्र विप्रशमभ्यासो वैश्यमेघं ददर्श सपृष्टस्तेन कस्तम्भो हेतुचागमने स्त्रग शशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरणे वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतं वैश्य प्रशया वनतो निर्मम वैश्योवाचः समाधिर्नाम वैश्यो उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारै निरस्तस्य धनलोभादशादुभिः विहीनस्तधनोधार्य पुत्रराधाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तापलब्धुः सोहिङ्न वेदि पुत्राणां कुशलात्मिकं प्रवृद्धिं सोजनाम्नां च दारणं चात्र संस्थितः किं नु तेष गृहक्षेमां किं नु सम्प्रदां कथं ते किं नु सद्व्रता दुर्वदा किं नु मे सुता राजोवाचः ये निरस्तो भवालुब्धै पुत्रधारादिवर्धनै तेषां किं भवत् स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्यो उवाचः एवमेतथा प्राह भवानस्मद्गचं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताङ्मन यै संत्यज्य प्रतिस्नेहं धनलुब्धै निरास्कृत पतिश्चो जनहार्दिर्च हार्दिर्तेष्वेव मे मन किमेतन्ना विजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रवप्रणं चित्तविघ्नस्वपि बन्धुष तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मणेशं च जायते करोमि किं मन्नव्यन मनस्तेस् विपरीति निष्ठुरं मार्कण्ड्यो उवाच ततस्तौ सहितो विप्रतं मुनिसमस्पस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यः सौषधपार्थिव सत्तम कृत्वा तु तै यथा यान्यं यथानहं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाकाङ्क्षी चक्रतु वैश्यपार्थिवौ राजोवाचः भगवन् त्वामहं पृष्टुमिच्छमेकं वदस्यो तत् दुःखाय यन्मे मनाश शोचित्तयततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वेव खुलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तमः अयं च निकृतपुत्रधारा भर्तेस्ततोजितः सोजनेन च संत्यस्तु हार्दिस्तेषु हार्दिर्तथाप्यति एवमेषा तथाहं च द्वापप्रेत्यन्तदुःखितौ तृष्टदोषोऽपि विषय मम त्वाकृष्टमानसै तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानोरपि मम स्या च भवत्तेषा विवेकानन्दस्य मूढसः ऋषिरुवाचः ज्ञानमस्ति समस्तस्य जञ्जविषयगोचरे विषयश्च महाभाग यान्ति चैव पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिना केचिद्राता बन्धास्तथा परे केचिदिव तथा रात्रौ प्राणिनः स्थलदृष्टय ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनो सर्व पशुपक्षिमृगादय ज्ञानं जतन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगवंशिणां
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथो भये ज्ञानेऽपि सति पश्यतान् पथङ्गांशावशंसुषु कर्णमोक्षा दत्तान् मोहादात् तत्पीड्या माननरपि क्षुधा मनुष्या मनुजव्याघ्रा शबिलाशा श्रुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्मेदं किं नु पश्यति तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते न पातिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारणा तन्नाधरा विस्मयो कार्यो योगनिन्द्रा जगद्पते महामाया हरे सैषा तया सम्मोरिते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलदा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते वृषं जगदे तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा निर्णाम भवति मुक्तयो सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूत सनातनी संसार बंधु हेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाचः भगवन् का ईशा देवी महामायाति यन्भवन् ब्रवीति कथमुत्पन्ना साकर्मश्च किं द्विज यत्प्रभावच सा देवी यत्स्वरूपा च योधुवा तत्सर्वतो श्रोतुमिच्छामि त्वमो ब्रह्मविदम्बर नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समर्पतिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं माविर्भवति सा यदा उत्पन्नोति तदा लोके शानिप्यापे विधीयते योगनिन्द्रां यदा विष्णुर्जगते कारणविकृते आस्थिर्य शेष भजत कल्पन्ते भगवन् प्रभु तदा द्वावशूरो घोरो विख्यातो मधुवैढवो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तु ब्रह्माण्डमधो शनाभिकमलो विष्णु स्थितो ब्रह्म प्रजापति दृष्ट्वा तावशूरौ चौग्रौ प्रसृतं जनार्दनं दृष्ट्वा योगनिन्द्रां त्वमेकाग्र हृदय स्थितः विवोर्धनार्थाय हरिर्हरि नेत्रकर्ताय लाइमां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निन्द्रां भगवती विष्णोरतुलं तेजस्प्रभु ब्रह्मोवाचः तुम स्वाहा तुम शोधा तुम ही बकटकार शौरात्मिका शुधा तुम छेर नित्य त्रिधमात्रास्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्ययानुच्चार्य विशेष्यते त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी पुरा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृजयते जगत् त्वयि त्वत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपान्तं तं सृष्टिरूपा च पालने तथा संहितिरूपान्ते जगतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रेर्महारात्रेर्मोहरात्रेस्तदारुणा त्वं श्रीस्त्वमेश्वरी त्वं मृस्त्वं बुद्धिर्बोधलाक्षणा लज्जा पुष्टितया तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी चापिनी बाणा भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्य भैस्तुति सुंदरी परा पराणां परमत्वमेव परमेश्वरी यच्च किंच क्वाचिदस्तु सदाखिलात्मिके तस्य सर्वशया शक्ति सात्वं किं स्तूयते तदा ययत्वा या जगरषष्ठा जगत्पत्याति यो जगद सोऽपि निन्द्रावशङ्नीत कौस्तुं स्तोतु महेश्वर विष्णु शरीरग्रहाणां महमीशान्येव च करितास्ते तथास्तं कस्त्वास्तं शक्तिमान् भवेत् सात्वं मिथ्यं प्रभाव रौद्रे विसंसुता मोहेतौ दुराघर्षा बशुरो मधुवैठवा प्रबोधं जगत्स्वामी नियतामच्युते लघु बोधश्चक्रतामस्य अन्धुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाचः एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र बोधश विष्णु प्रबोधनार्थाय नियन्तं मधुवैढवौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयव्यस्तुथोरस निर्गम्य दर्शनाथस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन उतस्थौ च जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दन एकारण बोहिषायेन ततः सदृशचेतसौ मधुकैटव दुरात्मना बतिप्रिय पराक्रमो क्रोधरक्तक्षणबन्तुं भ्रमणं जनितो मधौ समुत्थाय ततस्ताभ्यं युगे भगवन् हरि पंचवस्त्रसहस्राणि बाहुप्रहारणो विवितावप्येति विलामन्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरो मतो ब्रियतामधिकेशवं श्रीभगवानुवाचः भवेता मदमे तुष्टं मम वध्या भोगावपि किमन्येन वरेणात्र यथावृत्तिवृतं मम ऋषिरुवाचः वञ्चिताभ्यमदिमिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्ये ताभ्यं गदितो भगवन् कमलेक्षण आवाङ्जहीन यत्रोर्वि सलिलेन परिलुप्ता ऋषिरुवाचः तथेत्युक्त्वा भगवान् शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैछेन जगेन शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा सुता स्वयं प्रभावमस्य देवेस्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ओं श्री इति मार्काण्ड्यो पुराणो सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्यो मधुकैटभ वधो नाम प्रथमोऽध्यायः।